हेलो। ओके। यो, आ गया मैं वापस। भाई थोड़ा सा क्वेस्ट करना पड़ेगा मेरे को पुल करने के लिए भाई क्वेस्ट करना पड़ेगा। साउंड लो हो जा। मेरे को पुलिंग पुलिंग करने पड़ेंगे, क्वेस्ट करने पड़ेंगे ताकि एस्ट्रेट्स कलेक्ट हो भाई। ओके, एक मिनट देना। बिल्डर को देता हूँ ही। ओके, मेन स्क्रीन पे आते हैं। हेलो, वॉलपेपर देख लो भाई। विंडो वॉलपेपर इंजन। करना पड़ेगा। हेलो। ओके, आवाज आ रहा होगा। एंटी लैग, प्रेस ऑल्ट आर। एंटी लैग वाला कुछ देने तो मेरे को। गेम, चलो। ओ हम इधर है, इधर जा। एक्सपेक्टेड रेशियो परफॉर्मेंस कौन है? अच्छा, लैपटॉप रहना है। तो भाई क्या ज्यादा नहीं दे रहा, 35 दे रहा है अभी। I mean 30 is enough. हो गए पहले।
डिलीट करना पड़ेंगे पहले, रुको पहले डिलीट कर लेता हूँ। हाँ कुछ नए इवेंट्स आया है, राइट, कुछ नए इवेंट्स आया है। क्यों इवेंट्स आए हैं? नए इवेंट्स आए हैं वैसे। गेम लास्ट क्लेम है ये, कर लेता हूँ। फुल साइज पे, नाइस। तो बचे कर ही लेता हूँ ट्रायल, कुछ ना कुछ सामान तो मिल ही जाएगा। कितनी गर्मी है भाई। Yotan and I will enjoy. खत्म। तो मैं डिलीट कर लेता हूँ, डिलीट करके मैं ट्रस्ट कर, मेरे को चाहिए भाई। उसके लिए मैं कुछ भी करूँगा भाई। उसके बाद मैं नया एरिया पे जाकर करूँगा एक्सप्लोर। ये और ये काम भाई साहब। पता है कभी कभी गेम स्मूथ चलता है, कभी कभी स्मूथ नहीं चलता, पता नहीं भाई क्या दिक्कत है इसको। कभी गेम बहुत स्मूथ चलने लगता है भाई। रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट आपको बहुत सारे चेंज दिख रहे हैं मेरे को। कुछ कुछ एरियाज पे कोई लैग होता है भाई। कुछ एरिया इतने स्मूथली लोड हो जाते हैं, कुछ कुछ एरियाज
इसलिए ये वाले इस पे आना नहीं चाहता था भाई। इस वाले एरिया पे बहुत ज़्यादा लैग होता है भाई, मतलब मेरे को पसंद नहीं है ये वाला एरिया। लैग होता है भाई ये बहुत। देखो देखो तो नया वाला एरिया पे फार्म मैस्को मेला है क्या है, ज्वाइनिंग ओरिजिनल डिस्कॉर्ड इवेंट, नाइस। They confirm that issue with dreaming deep event after following simply unable to participate because certain domain theaters were stuck at 80% loading where applied hot fixes. Follow cool. Yeah. मेन क्वेस्ट करते चलो करें ये दबाओ focus mode on. You are about to enter focus mode for the story. These trees resonator and game environments occupied by other quests but temporarily suspend their progression. Proceed. हाँ कर लो कर, बेटर है ये, मेरे को साइड स्टोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिया है ऐसे पुल्स कितने हैं देखो, क्या कहते हैं 52 पुल्स हो गए थे, ठीक है कल। ये आज करूँगा 53 होगा ये, अर्ली मिला तो अच्छा। 4 स्टार ओके। कैरेक्टर स्क्रीन खोलो। Anything I can help you with? Gotcha, didn't I? Every time there is a scroll deviation cast into oh proceed। और 2 नए इवेंट्स आ रहे हैं ना, Traces of resonance energy discharge everywhere. What a mess! This place looks like it was just bombarded. और इस पे Yep, that's definitely Cartethiya's residual frequencies. Where did she go? इधर ले जा रहा है। ये तेजी से ले आया ना, लैग कर लिया क्या आई थिंक मेरा। ओ अच्छा कट सीन चालू हो रहा, वाह भाई। कार्टिलिया गायब हो गई है, कार्टिलिया को ढूंढना पड़ेगा तो बस फ्रीक्वेंसी में। What? Phones. Can you tell where these traces lead, Abby? Over there! But the traces are kind of messy. They feel unsteady, too. That way. That's the archipelago across from Laguna. The traces are still fresh.
We should follow them to find Cartethiya before they fade. Should we go now? Yes. With the Thenodian's will gone, she wouldn't lose contact unless something's wrong. Really wrong. But before we go... परफॉर्म कर रही है ये Enterella. Call from the honored laureate himself. What is it? Missing the serenity of my castle, I presume. Explain what happened to Enterella. Cartethiya is missing. I see. It is indeed a rather urgent issue. Go on. What is it you wish to ask of me? I want to learn more about the archipelago before I set off to find her. Caution is indeed a virtue. Since you're Check. in a hurry, I'll spare you the Yeah, lengthy details. That archipelago is called Septimont. It's another city-state within Renacita. Like us, its people were guided by the Sentinel across vast seas to settle there. But over time, Septimont and Raguna's differences led to a rift. Each one forged its own path. What kind of differences? Septimontians don't believe in the Sentinel. Septimonians क्या है? Septimonians क्या है? Even from a shared origin, the hearts and minds of people can diverge in unexpected ways. Septimont is a city of warriors. It's अच्छा. all for glory. Fear no death. They revere heroes, not the divinity. Under the Order's control, Raguna enforces strict border controls for Septimontians. But Septimont places no such barriers for the Ragunesi. Okay. You could say that Septimont has a far more accepting attitude towards Outlanders. At present, Septimont is hosting the Great Aegon, a cornerstone in the city's economy. Such a season draws visitors from far and wide. Sounds like the perfect time to visit Septimont. Thank you, Cantarella. अच्छा सेप्टिमन जगह का नाम है. Okay. You're the Thessalians. सेप्टिमोनियंस उस जगह के लोगों का Of course. लोगों कहते हैं. My esteemed guest. No need for formalities between us. Shadow of the Glory quest unlocked. Look! A Wangray right here! It can give us a lift. तो चलो. इस अरे कहाँ गया? एंजाइटी हो रहा है इसको. अभी को एंजाइटी हो रहा है भाई. अब क्या ट्रैवल कर रहा है भाई ये.
आई थिंक कट सीन आएगा तो होगा। तो बेटा ठीक है। ओ लोड हुआ। कुछ तो लोड हुआ था। हेलो गेम। ओके कट सीन आ गया। भाई ये एरिया ऑप्टिमाइज नहीं है भाई, लैग होता है भाई क्या। जैसे ही एक नया म्यूजिक भाई, क्या म्यूजिक है भाई। Abby, we've arrived. How do you feel now? Abby? Nothing from my tacit mark. Is it sleeping? Or is it... Cartethiya helped with Abby's symptoms before. I can really use her help now. We share the same thread of Imperator's power. I can try using that to sense where she is. What's that creature she's facing? A half-human, half-lion tacit discord? Or a special echo? She was here before. I'll follow the same path and see if I can find someone to talk to. पीछे से कोई बहुत ज्यादा फोलिज ऐड किया इन लोगों ने। फोलिज क्या कहते हैं, फोलिज कहते हैं ना। एक मिनट देना। An echo that awaits a true warrior. तो इधर पहुंच गए, नाइस। इधर क्या है, हीरो स्लैश। Aim at the mechanism, press the highlighted button to don the hero legacy armor and gain the hero slash skill। hero slash skill क्या करता है? First one button to slash। अच्छा It seems happy. Is it because I'm reminding it of past battles? Looks like I've made my first friend here. तो मैं इधर पहुंच गया। एक मिनट देना। All
All right. Where are we off to next? Time to get back to work. एरिया फिक्स होने में टाइम लगेगा। कटसीन क्योंकि 300 कटसीन है तो वो स्मूथली चल रहा है, बट वैसे So, this is 𝐴MD. सेप्टिमॉन पे पहुंच चुके हैं भाई। Interactive site carries a trace of Cartethiya, but नहीं दे रहा। ठीक है भाई, ठीक है गेम, एक कर लो तो। ये कार्टेथिया का दिखा रहा है अभी। The traces will guide you here. And when the time comes, you'll bring this story to its rightful end. The scent of seawater. It's right ahead. ओह, लैग करने लगता है, पता है क्यों? मेरा लैपटॉप गर्म हो जाता है। think I can fly too. कितना टेम्परेचर दे रहा है अभी? पिंग भी भाई बहुत घटिया पिंग है। टेम्परेचर मेरे को अभी शो नहीं कर रहा वैसे।
सीपीयू ज़्यादा यूज़ हो रहा है इसलिए टेम्परेचर ज़्यादा है। यप 86 तक जा रहा है, 87 86 87 तक जा रहा है। तो फिर भी ठीक है। क्यों जा रहा है 100% सीपीयू यूसेज हो रहा है भाई इधर। इस सीपीयू मेरा वो भी यूज कर रहा है, ओपीएस भी यूज कर रहा है, सीपीयू ये भी यूज कर रहा है, इसीलिए इतना लैग ही फील हो रहा है। तो भाई ये सीपीयू है भी है ना, और मेरा सीपीयू उतना अच्छा नहीं है। Destroy all the pipes. Incubator's experiment. I need इन जगह पे वो यूज हो रहा है ना जीपीयू, तो इन जगहों पे मेरा गेम स्मूथ चल रहा है। बुदिनोस वाले को वो कर देना चाहिए भाई, पूरा जीपीयू पे शिफ्ट कर देना चाहिए गेम को, लाइक लोअर डिवाइसेस के लिए। जीपीयू वाले पे शिफ्ट कर देना चाहिए। Collapse the experimental unit. Okay. तो एक टूट गया। Reasons for defense mechanism. मैं एक और काम कर सकता हूँ, रुको रुको रुको, एक और चीज मैं कर सकता हूँ इधर, थोड़ा सा लैग उससे कम हो जाएगा, कर सकता हूँ मैं। ये कर सकता हूँ, ये इसको वो करके लेवल प्रीव्यू ऑफ कर दो और इसको मिनिमाइज कर दो, और स्मूथ चलेगा अभी। और खत्म। Modern दूसरा वाला टूट गया, एक और बचा है उधर। इस पे जंप करेगा ये। ये कटने वाला है। ओके, ओ भाई साहब, ओ था मेरे को। ओके, ये वाला कंप्लीट हो गया।
release. साउंड कौन है ये? रूपा। ये इसका मैंने वो देखा था ट्रेलर पे, रूपा, बट ये है पपेट है शायद, पपेट। There's a village up ahead. I'll go talk to some locals. क्या प्यारा लग रहा है भाई ग्राफिक्स। भाई मैंने एसी ऑन कर दिया, अभी ये ठंडा हो गया थोड़ा सा लैपटॉप, तो अभी बहुत लग रहा है भाई गेम। जाना तो सामने की तरफ है। ओ उधर वो है, वे पॉइंट है, वे पॉइंट की तरफ जाना है। उठाते हुए चलो भाई सब कुछ। मेरे को इधर का वो सुबह वाला वो देखना है, फॉलिएज वाला सीन। लोग कह रहे हैं कि इधर फॉलिएज सबसे ज्यादा है, लाइक वेजिटेशन फॉलिएज, ग्रास सबसे ज्यादा है ग्रास के। I knew it. The Blue Furies remain undefeated. Folks always write them off, thinking they're just sailors or singers. That don't matter in the arena. It's all about pure strength. Most of the teams in this year's finals aren't even backed by local nobles. So what? Worried about your bets? How many times do I have to... Hey, All right. Oh, look here, a visitor. Welcome to Septimont. Your clothes aren't from around here. Are you from the New Federation? No, I'm a Wonglong actually. I've met some visitors from Guanglong before. Proper folk, polite as can be. They do tend to speak in riddles, though. We just watched a live match. It's too bad you missed it. Mattia from the Blue Furies gave the other team a right pounding. aye. Capitolini Hill's holding the Great Aegon now in the city. Happens every 4 years. All of Septimont's talking about who'll be the next champion. You here for the games too? No. I'm looking for someone. At this time? That might be tricky. Folks from all over Solaris are flooding into Septimont lately. Who's it you're looking for? This here is the first stop for ferries heading to Capitolini Hill. Maybe we've seen him before. Capitoline Hill. Maybe there's arcs about Cartethiya. Can't say I've seen anyone like that around. Most Raganesi we see here are from the Troop of Fools or the Montelli Nobles. They're a bit more open to our ways of thinking about faith. If she's wearing the Order's emblem, though, she'll have drawn some eyes. After Cartethiya and Fleur-de-Lis's frequencies merged, she got her body back. If she passed through here, people would have seen her. Yep. Half-human, half-lion creature wearing armor and swinging a poleaxe? That's gotta be the Guardian Echo of Septimont. Who's Guardian Echo? Of glory, Arsinosa. Arsinosa, okay. ये कौन है? गार्डियन एक मतलब क्या है? लायोनेस ग्लोरी। अच्छा, वो मेन बॉस। Can you tell me more about this Guardian Echo? Oh, gladly. See, ever since our ancestors set foot on this land, we Septimontians have fought the harsh elements and the savage tacit discords. Many brave souls settling in the stone that now stands as Arsinosa. She was born from the battle's roar and the fierce bellows of pride. As the Guardian of Septimont, Arsinosa usually only reveals herself during the Great Aegon. To earn her blessing is the highest honor any Septimontian could hope for.
Why would Cartethiya take on 𝐴𝐵𝐺𝐷𝐼𝐴's guardian Echo? If you want to see her, just wait for the finals. They'll be held in the Colosseum in the city. But don't dawdle. Get a ticket now, or you'll miss out. Oh, what the hell happened? As for that order girl you're looking for, you might try asking in the inns around the city. Clay! Edwin! Come give me a hand! क्या हुआ? Right, we best be off. If you want to see the fights, follow this path to the arena. Okay. Ticket booth's just up ahead. मेरा क्रैश कर गया था ये। छी भाई। फोन पे YouTube क्रैश कर गया। फोन पे YouTube क्रैश कर गया, पता है? चैट लाइक पे देखता रहूंगा फिर चैट। कैमरा अगर ऑफ हो जाए तो बता देना भाई चैट में। और अगर तुम लोग स्ट्रीम देख रहे हो तो लाइक कर देना याद से, कि बहुत सारे लोग लाइक नहीं करते भाई। देखते तो है बट लाइक करना भूल जाते हैं। लाइक कर दिया करो। अरे ओ लाइक कर दिया करो भाई। Its frequency is similar to the echoes in Ragusa. Could it have originated from Imperator's power as well? But it's unstable, as if something else is interfering. Strange. It's just like Abby said. I can feel its source close to the city, but can't pin down where exactly. Boss, you're looking so serious. कौन है ये? Oh, And I think वो playable character है ना? I think. I'm a traveling Taoist from Mengzhou. Just call me Buling. Myeongju, one of the 6th major cities in Wanglong. Wait, what? Exorcism? Talisman divination? I think 4-star है ये. You name it. But I cat. So, you wanna try your luck, Ba? how did you know my name? Heard about you from an old friend. You know Jinshin? Yep. Jinzhou. Jinshin. Trained with the same master before me. We've got history. Last time I went up to the mountain to see her, she mentioned you. So I hear you're looking for someone? Not so easy, not so easy. The feng shui in Renacita is not good. The tea is trapped underwater, not good flow. No luck now, bad sign. You should be careful, boss. Bullying. You show up and the stars Bullying भाई. on who could break the deadlock. So I'm glad I caught you first. नाम भाई क्या करते हैं बोले हैं.
Okay. Optional, go to the optional. Ask about Arsinosa. You want to know about Arsinosa? Arsinosa, sorry. Pronunciation by मेरा गलत होता है बहुत. If you visit the downtown area on Capitoloni Hill, you'll see it for yourself. The Griffon statues are everywhere. They've been part of this archipelago since ancient times. We used to fight them, but we've always respected their strength and bravery. Strong emotional frequencies tend to settle within things. That's how Arsinosa came to be. She was once just a Griffon statue, but the people's burning desire for victory transformed her into 𝐴𝐷𝐸𝐴 echo. Okay. It's a kind of testament to our will. I've heard that the Sentinel came to Septimont not long after Arsinosa was born. It's said they even met her. I can't help but wonder what happened. As the Sentinel's fellow warriors, we Septimontians pay heed to their actions. But after that, इसी पर कर देता हूँ भाई. last time the Sentinel came to Septimont. Maybe they saw we could handle things on our इसी own. बंद कर देता हूँ They फिलहाल. decided to entrust the city to our ancestors. मेरे को लगा कि लैपटॉप गर्म हो जाएगा तो नहीं चलेगा. ठीक है, चल रहा है. Honor, तो don't इसी you think? के लिए बंद कर दिया मैंने. Arsinosa. She will stand watch over our land now and forever. Okay. Yeah. Ask about the Sentinel and To us Draguna. Septimontians, they are a strong comrade in arms. They're also the guide who led us to our new home. Oh, by the way, Like the 𝐴𝐵𝐸𝐴, our ancestors खाएगा? were displaced and forced to sail for Drumsticks है भाई. But घर पे बनाए हुआ that was drumsticks. the most of our strength. Chicken drumstick. It tempered our bodies and minds, teaching us that humanity itself is the true hero of Septimont. Only the strongest can stand beside the Sentinel and fight. Without the blood spilled and sweat shed, Septimont would have known no peace, no stability. But the 𝐴𝐵𝐸𝐴 lost their way, treating the Sentinel like some kind of divinity. They forget it's the strength of people that counts. And that's just cowardice. An easy escape. Here, if we build statues, it's to honor the heroes of the hunt. Although, I've heard things are changing over there in Laguna lately. एक मिनट देना, मैं आता हूँ. ठीक है, 1 मिनट देना. Time to get back to work.
हाँ आ गया मैं। हेलो। ये चैट गायब हो रहा है क्या मेरा? स्ट्रीम का चैट गायब हो रहा है क्या? Right. Where are we off to next? रुको भाई, कुछ तो इश्यूज है। तो मेरा स्ट्रीम का चैट गायब हो गया भाई। पता नहीं क्यों, बट मेरा स्ट्रीम का चैट गायब हो गया। एक मिनट। ओके 12 आवर हो गए, क्योंकि मैंने 12 घंटे पहले स्ट्रीम शुरू। स्ट्रीम अगर शुरू करूंगा, चैट गायब तो नहीं होना चाहिए ना। एक मिनट। एक्सक्लेमेशन गेम लिखवा तो क्या आएगा? एक्सक्लेमेशन गेम, गेम ही लिख दिया भाई, वाह। इसलिए फटलान, अच्छा इसको चेंज करना पड़ेगा। गेम टू वुथरिंग वेव्स। 2 मिनट देना भाई, को 2 मिनट देना। पूरा चैट ही गायब हो गया भाई मेरा। Time to get back to work. पता नहीं क्यों, बट पूरा चैट ही गायब हो गया मेरा। डैशबोर्ड, सिस्टम कमांड, इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा शायद मेरे को, ताकि ऑटोमेटिकली अपडेट करता रहे। अपडेट हो गया होगा, अपडेट गेम टू वुथरिंग। अभी अगर एक्सक्लेमेशन गेम लिखोगे तो वो आएगा। अब वुथरिंग वेव्स लिख के आएगा, एक्सक्लेमेशन गेम लिखोगे तो। ठीक है। कुछ इश्यूज तो हो रहा है शायद से स्ट्रीम में, क्योंकि मेरे को इधर ये शो नहीं कर रहा। चैट आ रहा है क्या? कैसे पता चलेगा चैट आ रहा है कि नहीं? मैं खुद का चेक करूँ तो मेरे को मेरा चैट दिख रहा है, तुम लोगों का चेक करो दिख नहीं रहा। वो ही तो क्या इशू है? क्या इशू है? क्या इशू है? ओ, ये एक्टिवेट करना पड़ेगा पहले। को एक्टिवेट करके आता हूँ। मैं गलती से ई दबा देता, पता है, क्योंकि मेरा आदत पड़ेगा ना दूसरे गेम का। उस पे ई दबाने से वो होता है ना, क्या कहते हैं, इंटरेक्ट होता है। मेरे को उसका आदत पड़ गया है गंदा की जगह, उसकी आदत पड़ गया। मेरे को इधर जाना है, टियानपोन के इधर। हम इधर आ गए हैं। ओ, इधर ज्यादा टेलीपोर्ट्स नहीं है। ओ, बहुत कम टेलीपोर्ट्स है। अबे चलो नीचे चलो। ओ हेलो। नाइस, गाना सुन रहे भाई लोग, बढ़िया है। मेरे को इधर से होते हुए नीचे जाना है। हाँ, सही जा रहा हूँ मैं। जाते जाते ये भी उठा लो भाई, क्या पता कब कब काम आ जाए। ठंडा हुआ है क्या थोड़ा सा? आने लायक। हाँ
talking. Careful now. We'll see who rips whose throat out first. कॉकी है भाई ये इस पे एटीट्यूड है भाई एक पे भाई Why don't you take your band of cowards and get out of my way before I decide to handle it myself? Pulling dirty tricks before the Aegon. Did you think I wouldn't notice? Did you ever stop to think you nearly got an innocent person killed? Shame on you. Looper. So you're really not going to reconsider? Even with the finals just around the corner? Reconsider? You think I should keep playing along and stay blind to your match fixing? I don't care what you do off the field, but in the arena, fairness isn't negotiable. If you can't get that, just keep wagging your tail for the house. You know, I once thought you were a decent gladiator, and we fought well together. But look at you now. Pathetic. You? Emilio. You know nothing, Looper. Not everyone has the same strength to survive in Septimont with a clean conscience. Sorry about that clown show. Don't judge Septimont by a few rats that can't hold their own in the dirt. They're not the norm here. Looper's the name. Gladiator by trade. Guess we're acquainted now after crossing. ग्लैडिएटर मतलब वो ना जो लड़ाई करते हैं. Tell me your name. I mean, तू ना मतलब वो ऐसे the gladiators वाली जो लड़ाई. What's your name? Sayan Senpai भाई वैसे सब्सक्राइब कर लेना चैनल को मैं हूँ तो Got it. It's rare to meet someone with your kind of strength. a lot of fight I guess a lot of fight I take down Tacit Discord every day. Thanks, it most impressed me too. I'm used to fighting the gladiators here, but the way you handled your blade, oh, it's beautiful. I like it. Bye, impressive. Just now. Did they try to ambush you? Just about. That man, Emilio, used to be my partner. The Silvers were probably behind this. Silvers कौन है? The House of Silver is nobility in Septimont. I Okay. share their name, though. I'm sure they've thrown me out since I stepped away from the team. Is this tied to the match fixing you mentioned? Yes. I knew something was off, but I didn't think they'd go this far. Maybe they threw some serious money at it. I thought the money I made them would have been enough. Oh well. I was thinking, you're not a local, are you? How about we team up and fight together in the finals? That's Cartethiya's frequency. But how? Is that your way of saying yes? I'm sorry. Lupa, have you ever met a 𝐴ᴵᴇᴜ girl by the name of Cartethiya? Cartethiya.
Nope, never heard of her. What's going on with her? She's missing. I'm looking for her. I tracked her to Septimont, and it seems she confronted Arsinosa. Arsinosa is the symbol of our spirit, the great echo guarding Septimont for centuries. Besides the current F4, Augusta, nobody has ever faced her directly. I don't know if this Cartethiya of yours is strong enough to take on Arsinosa. If she did, it would be the talk of Septimont. I see. No leads yet, then. Well, that's why you should join me in the Aegon. When Arsinosa shows up in the finals, you might find the answers you're looking for. The champion gets noble recognition, a hefty bonus, and some secret perks. If we win, you can take it all. If that doesn't interest you, then the attention that comes with being a champion will help you find the information you need on her. True. But what's in it for you? Me? I just want to see the look on their cheating faces when they realize I've beaten them at their own game. They're probably betting against me in secret. Ha! Doesn't matter. Once we win, they'll lose it all. Serves them right. If there's no punishment for crossing the line, then what's the point of a line at all? I don't know what other tricks my dear family has planned, but you're an outlander. Strong, too. No ties to their schemes. That's why I look forward to walking this path with you. Can't wait to see what kind of gladiator you'll be. Arsinosa and the unusual frequency I felt from Lupa are the only leads I've got. Lupa denies ever meeting Cartethiya, but maybe she didn't realize. Or she's hiding something. Either way, teaming up with her is my best shot at finding the truth. तुम कोशिश कर वैसे अभी शुरू किया भाई चिकन खा रहा हूँ चिकन खाते खाते भाई वो कर रहा हूँ भाई स्टोरी कर रहा हूँ अरे भाई सुनो कल सुन रहे थे भाई Well then, ट्रीटमेंट करना पड़ेगा ऐसे on you, my fellow warrior. Now, let's go register our team. A team. मेरे को मुझे लूपा पसंद आ रही है पता नहीं क्यों मेरे को कार्टेथिया से ज़्यादा लूपा पसंद आ रही है I don't know why. But मेरा guaranteed है मेल रोवर समझ ही नहीं आता क्या मेल रोवर से समझ क्या लिखे हो मेल रोवर से समझ नहीं आता All right. Where are we off to next? मेल रोवर से समझ नहीं आता स्टोरी अच्छा मैं मेल रोवर इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि मेल रोवर का जो वॉइस के जो डायलॉग्स है ना वॉइस डायलॉग वॉइस वो डायलॉग वो फीमेल रोवर से बेटर है दैट इज व्हाई एक मिनट देना भाई हाँ पकोड़ा खा रहा था भाई चिकन पकोड़ा घर पे बनाया हुआ वैसे पता है मेरा पता नहीं क्यों
मेरा एकदम लोएस्ट ये जीपीयू और सीपीयू एकदम लोएस्ट उसका है, फिर भी बहुत स्मूथ है भाई। आई डोंट नो व्हाई। और पिंग भी सही आ रहा है। लाइक हल्का सा डिले है, मैं ये नहीं कह रहा डिले नहीं है, हल्का सा डिले है। लाइक माउस मूवमेंट पे थोड़ा सा डिले हो रहा है, इतना कोई वो नहीं है। सिनेमैटिक क्वालिटी भी है। ग्लैडिएटर से लड़ रहे हैं। ओके हेलो। अरे चराई नहीं करनी तुम्हें। Hi there. Is team registration still open? May applause greet you? Yes, you can register. Oh, wait, you're Contender Looper. Do you wish to register a new team? Yes. Aren't you? Plans changed. I'm no longer with the Bow of Legions. This is my new partner. Okay. Oh, I see. Allow me भाई to... एनपीसी का भी कैरेक्टर के प्यारा बना के रखा है भाई इन लोगों ने। लग ही नहीं रहा एनपीसी भाई। Why don't you do the honors? उधर कैस्केड दिख रहा है मेरे को, कैस्केड लूंगा। विक्ट्री Wuthering स्टेला लूपा एश्योर्ड विक्ट्री। स्टेला लूपा मतलब वो है ना, उसका मतलब। I take it you are referring to the two of us. The star does suit you well. All right, the name is settled. We'd also like to apply for the special qualifier, please. Of course. Please wait one moment. Okay. What's the special qualifier? Gladiators 𝐴𝐺ON happens year-round in Septimont. Gladiators 𝐴𝐺ON? Exhibition games, open tournaments, you name it. Gladiators 𝐴𝐺ON, echoing gladiation, Septimonian signature sport, the echoing battle besides gladiator. Victory hinges on the corporation. Oh, okay. We're after समझ में तो घंटा आया है मेरे को, बट थोड़ा बहुत समझ में तो एकदम आया थोड़ा सा। years. We also call it the Great 𝐴𝐺ON. There are two stages, a points-based prelim and an elimination round. The prelim is almost over. The eliminations are about to begin. Okay. I've earned enough points from the regular matches to qualify for the finals, but since you're a new contender, you'll need to win the special qualifier to make it. If we defeat higher-ranked opponents, we can secure a spot with fewer matches. Just the two. वैसे गेम का क्वालिटी कैसा लग रहा है? Do you want to? बताना। Exactly. It's one of the reforms the new F4 made to the 𝐴𝐺ON. गेम का क्वालिटी सही है। Our Echo partners will be joining us in the arena too. Echoes aren't just companions to us, but proof of our strength. Hunting them, taming them, and learning to live with them is the first lesson every Septimontian learns. Now, it's time to step into the arena. Ready? सही है। चलो भाई थैंक। भाई मैंने बहुत वो किया है इसके ऊपर, मतलब ओबीएस से बहुत कुछ हटाया है मैंने। ओबीएस के जो ओवरलेज है ना, बहुत कुछ ओवरलेज, बहुत कुछ सेटिंग्स चेंज किया है ताकि थोड़ा स्मूथ लगे गेम। क्योंकि पता है ना कल कैसे वो कर रहा था, लैग कर रहा था गेम, मतलब एकदम अटक अटक के चल रहा था, ताकि वो ना करे एटलीस्ट। तो इससे बात करनी है। ओह बाय द वे 180 हो गया है, ठीक है। लाइक मेरा अगर तुम ये देखोगे क्या कहते हैं, मेरा ऑफिस एवरी टाइम क्रैश हो रहा पता नहीं क्यों। तुम उससे ओबीएस तुम उससे ले लो, क्या कहते हैं, स्टीम से ओबीएस डाउनलोड करो, स्टीम से ओबीएस डाउनलोड करो, वो बेटर है। स्टीम वाला ओबीएस बेटर है।
और वैसे मेरा पीटी अगर देखोगे, ये देखो कितना पीटी है, 1 2 3 4 5 6 30 7 8 9 45 50 51 52 10 फुल मार तो डबल 52 हो गया है। वेपन दो भाई मेरे को पहले, रेक्टिफायर दो भाई, घंटा देगा भाई रेक्टिफायर ये। तो 53 होगा। कचरा मिल रहा है, कचरा, लिटरली कचरा मिल रहा है भाई। भाई वाइट स्क्रीन पे ये क्या कहते हैं, ये पुलिंग वाला स्क्रीन क्या प्यारा लग रहा है भाई, पुलिंग यानी ये वाला स्क्रीन भाई। वैसे एक और चीज मैं दिखाता हूँ तो मेरे को, इसको ऑन कर लेने दो, वॉलपेपर इंजन ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। 10 pulse plus lag equals real 5 star, वो एकदम लो एंड डिवाइसेस के लिए होता है भाई, वो एकदम ही लो एंड डिवाइसेस के लिए होता है भाई। मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, रुको ऐश भाई रुको, दिख रहा है क्या, बता देना, दिख रहा है कि नहीं बता देना एक बार। मैं इसको मिनिमाइज कर रहा हूँ, ठीक है। ये कैसा है भाई इसका साउंड मैंने म्यूट करके रखा है वरना कॉपीराइट दे देगा। मेरा ये वॉलपेपर है भाई ओके, और अगर तुम्हें ना वो चाहिए, क्या कहते हैं, लैग, ओबीएस अगर लैग फ्री करना है ना, मैं हाइड ओबीएस ऑन करके रखा हूँ, रुको इसको ऑफ करता हूँ पहले, तो ये कर लेना। आई थिंक मेरा हल्का सा डिले है राइट इस पे। बाल अगर एनिमे स्टाइल पे खींचते तो अच्छा रहता, हाँ। अच्छा, जैसे देखो, जो ये जो प्रीव्यू विंडो दिख रहा है ना तुम्हें, प्रीव्यू विंडो जहाँ पे ये दिखता है तुम्हारा, क्या कहते हैं, वो पूरा ओवरले दिखता है जहाँ पे, ये वाला हिस्सा जब भी तुम स्ट्रीम चालू करोगे ना, इसके ऊपर राइट क्लिक करो, या तो इधर ऐसे राइट क्लिक करो, एनेबल प्रीव्यू करके ऑप्शन आएगा, इसको डिसेबल कर दो। तो बेसिकली क्या करेगा, वो एक्स्ट्रा जो छोटा विंडो है उस पर रेंडर नहीं करेगा कुछ भी, मतलब ओबीएस पे तुम खुद नहीं देख सकते बट स्क्रीन पे दिखेगा, जहाँ पे स्ट्रीम करो उधर दिखेगा बस। तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा वो क्या कहते हैं, ओबीएस थोड़ा सा लोड कम लेगा। जैसे अभी तुम अगर देख रहे हो 13% लोड ले रहा है सीपीयू का, वो होता है। अगर मैं प्रीव्यू एनेबल रखूँ पूरा, तो 25% तक चला जाता है बीच बीच में, तो उससे लैग होता है। और जो सेटिंग्स है, मेरा ये सेटिंग्स है, क्योंकि मेरा जीपीयू है तो जीपीयू के थोड़ा सा अलग सेटिंग्स होंगे, बट मेरा ये वाला सेटिंग्स है, जीपीयू वाला सेटिंग्स है इधर। बट एनकोडर जो सेटिंग्स है वो ऐसा है, ये डिपेंड करेगा तुम्हारा बिटरेट के ऊपर, ऑब्वियसली इंटरनेट के ऊपर। और मेरे को PP5 पे रखा हूँ और फुल पास और हाई प्रोफाइल पे रखा हूँ। और तुम्हारे पास अगर जीपीयू नहीं है, जो कि तुम्हारे पास सबके पास नहीं होता, तो ये जो एडेप्टिव क्वांटिलाइजेशन होता है, इसको ऑफ रख लेना, क्योंकि ये जीपीयू लेता है बहुत।
कि तुम सीपीयू से स्ट्रीम करते हो ना, तो ये चीज ऑफ रखना, लुक अहेड, एडेप्टिव फॉर्मुलेशन, इन दोनों को ऑफ रखना, बी फ्रेम 2 सेकंड पे रखना, प्रोफाइल हाई, क्वालिटी ट्यूनिंग तुम अपने ऊपर रख सकते हो, लो लेटेंसी रख सकते हो, हाई क्वालिटी में रख सकते हो, उन दोनों के बीच का रख सकते हो लो लेटेंसी, तो ताकि तुम्हें वो दिखे, क्या कहते हैं थोड़ा सा वो होगा, क्वालिटी थोड़ा सा डाउन होगा बट स्मूथ चलेगा गेम्स के साथ। और सिंगल पास मत करना कभी भी, क्वार्टर रेजोल्यूशन रखना हमेशा, क्वार्टर या फुल। और इसको जितना लो रखोगे उतना बेटर है, मतलब मीडियम टू स्लो, स्लोएस्ट रखोगे प्रॉब्लम देगा रेंडर होने में ओबीएस पे। और ये जो टारगेट क्वालिटी है ये तुम्हारे सिस्टम के ऊपर डिपेंड करेगा कितना ले सकता है, बस इतना ही है। इसको हाइड कर देता हूँ। बस इतना ही करना है बस, और कुछ नहीं करना, फिर देखना तुम्हारा वो स्मूथ हो जाएगा। और एक फाइनल चीज है, जो सीन एंड सोर्सेस का जो वो है ना, हमेशा ये रखने की कोशिश करो कि उस पे जो सोर्स वाला सेक्शन है, सीन वाला नहीं, सोर्स वाला एक सेक्शन मिलेगा, उस पे बहुत कम, मतलब लाइक हर एक, मतलब जैसे लाइक तुम 3 सोर्स बना रहे हो, लाइक मैं जैसे एक होगा स्टार्टिंग सून का, एक होगा एंडिंग, और 2 मेन सोर्स है जिसपे होगा बी राइट बैक, लाइक ब्रेक लेने के लिए, और एक चैटिंग वाला होगा, चैटिंग और गेम का। जो गेम का जो सोर्स है, जो मेन सोर्स है जहाँ पे तुम गेम वो करोगे, उस पे बस 3 चीजें रखना, 3 मैक्स टू मैक्स 4 होंगे, 3 चीजें रखना बट उस पे। लाइक फर्स्ट हो गया तुम्हारा गेम का गेम कैप्चर, वो हो गया गेम कैप्चर या विंडो कैप्चर रखना, कोई एक चीज रखना, 2 चीजें नहीं रखना। और डिस्प्ले कैप्चर तभी यूज करो अगर तुम सिर्फ डिस्प्ले कैप्चर यूज कर रहे हो, तभी यूज करना वो, वरना डिस्प्ले कैप्चर की उतनी जरूरत नहीं पड़ती, डिस्प्ले कैप्चर हमेशा ऑफ रखना। मेन चीज गेम कैप्चर हो गया, माइक हो गया तुम्हारा, और गेम का ऑडियो हो गया, ये 3 चीजें रखना उस पे। और उसके बाद जो चैटिंग वाला सेक्शन अगर तुमने क्रिएट किया है, चैटिंग वाला सीन क्रिएट किया है, उस पे तुम अपने यूट्यूब के अलर्ट्स, क्या कहते हैं, हाँ यूट्यूब के जो सब्सक्रिप्शन अलर्ट्स होंगे, हो गए, क्या कहते हैं, उसके बाद तुम्हारा रीडिंग का अलर्ट हो गया, उसके बाद वो मोनेटाइजेशन का अलर्ट हो गया, वो सब चीजें तुम उस पे रखना, जस्ट चैटिंग वाले सेक्शन पे। और बी राइट बैक पे तुम बी राइट बैक वाला सेक्शन बताइए एक ही रखना। और हाँ, मीडिया मैं हाईली रिकमेंड करूंगा, मीडिया सोर्सेस यूज मत करना, लाइक जो स्टार्टिंग सून या एंडिंग का जो वो है ना, स्टार्टिंग सून हो गया, बी राइट बैक हो गया, इनका जो वीडियो वाला जो सोर्स है ना, वो यूज मत करना, तुम खुद से वो कर लेना, क्या कहते हैं उसका, जीफ मिलता है उनका, लाइक वीडियो, मतलब कैनवा पे अगर तुम क्रिएट करोगे ना जैसे वीडियो, उस पे जीफ का ऑप्शन आता है, जो ट्रांसफर करना तो जीफ पे ट्रांसफर कर लेना, और उसको एज ए मीडिया सोर्स रखना, ताकि थोड़ा सा कम लोड करे सिस्टम पे। गेम कैप्चर पे ओवरलोड बताता, इसलिए डिस्प्ले यूज करना पड़ता है। गेम कैप्चर देखो, ये जो वुदरिंग वेव्स है, वुदरिंग वेव्स पे गेम कैप्चर काम नहीं करता, ऑनेस्टली बहुत दिक्कत करता है, वो काम नहीं करता। या तो उस पर डिस्प्ले कैप्चर या विंडो कैप्चर, बस ये 2 चीजें यूज करना। मैं पर्सनली विंडो कैप्चर यूज करता हूँ, क्योंकि इससे तुम्हें ये चीज दिख जाता है, लाइक मैं गेम के अंदर अगर कोई फिल्टर या कुछ कर रहा हूँ ना, जैसे ये हो गया, क्या कहते हैं, हिस्ट्री हो गया, पीटी सिस्टम, ये सब उस पर दिख जाता है आराम से। जैसे अगर ये देखो, जैसे बी राइट, हाँ मेरे को जरा 1 मिनट ये माइक
का कॉपी करना है इस पे। मैं बस टेम्पररी बता रहा हूँ, ठीक है। ये जो बी रेड बैग वाला जो सीन है ना, ये कोई वो नहीं है, ठीक है। लाइक मीडिया सोर्स नहीं है ये, मैंने खुद से वो लिख के क्रिएट किया है एज अ गिफ। गिफ अभी चल नहीं रहा क्योंकि बी रेड बैग वाला वो मैंने ऑन नहीं किया है इस पे। अगर मैं इधर बी रेड बैग वाला सीन अगर एक्टिवेट कर दूंगा तो गिफ्ट चालू हो जाएगा। हेलो सावन भैया, कैसे हो? अरे मैं ऐश भाई को बता रहा था ये चीज है। लाइक यूट्यूब का भी खुद का एक है ना टेक अ ब्रेक वाला। जैसे अगर मैं इसको स्टार्ट कर दूंगा इधर तो ये इधर चालू हो जाएगा टेक अ ब्रेक वाला, तो वो सीन है। जैसे ये देखो टेक अ ब्रेक लिख के आ रहा है ना नीचे, ये चालू हो गया ऐसा। मतलब लाइक तुम खुद का बनाया हुआ मीडिया सोर्स मत डालना बस उस पे। मीडिया सोर्स की जगह यूआरएल डाल सकते हो। लाइक कहीं कोई जो रेड बैक का या कुछ हो गया, मुझे यूआरएल मिलता है ना, यूआरएल डाल सकते हो लाइक वीडियो फाइल की जगह, वो वैसे सेट कर सकते हो इसको। बस वही है, उससे लैग नहीं होगा बस। हेलो सवार भाई, कैसे हो? क्या चल रहा है? एनीवेज बस इतना ही था ये। अभी गेम पे चलते हैं भाई। प्रोसीड। अरे ये चीज नोटिस किया क्या यश भाई? ये चीज नोटिस किया? इधर से तुम डायरेक्टली ट्रायल पे अभी जा सकते हो। लाइक बैनर से डायरेक्टली ट्रायल कर सकते हो। ऑनेस्टली ये फीचर बहुत प्यारा लगा है मेरे को। बैकग्राउंड बंद करना पड़ेगा। अच्छी भाई बैकग्राउंड लोड लेता है भाई। मैंने रैम कंज्यूम कर जाता है भाई। गेम खेल लो। स्टोरी कंटिन्यू कर रहा हूँ वैसे। स्टोरी हो जाएगा फिर मैं इवेंट वाला सेक्शन कर पाऊंगा भाई। चलो कंटिन्यू फाइट। थोड़ा सा एसी चला लेता हूँ, गर्मी लग रही है। मतलब मेरे को नहीं, लैपटॉप को गर्मी लग रही है भाई। मेरा ठीक है, लैपटॉप गर्म हो गया है। Let's begin. खत्म। 17K। यही खेल रहा था मैं, फाइटिंग वाला एरिया। ये वाला क्वेस्ट कर रहे थे। ड्रिंक वाटर, स्टे हेल्दी भाई। गर्मी का टाइम है, पानी पियो ज्यादा से ज्यादा। एक बार मेरा हेल्थ नहीं गया भाई। यही होता है जब स्मूथ चलता है भाई गेम। I could finally focus and savor every moment of the fight. Oh, thanks, warrior. Teaming up with you was the right choice. Fighting alongside Echoes was an entirely new thrill. Tadas, अच्छा। And never miss a chance to cheer for the victors. They're more fired up than you. मोटिवेटर मोटिवेशनल एकोस है भाई ये। Won them over. मोटिवेशनल एकोस है भाई। लाइक ये इन एकोस का कोई काम नहीं है मोटिवेशन देने के अलावा। Just as lively as the baby griffon I came across before. This city does know how to keep spirits high. Speaking of griffons, they've actually been here long before our ancestors even settled on this archipelago. And
Anyway, we've secured our first victory. The next match will be held further out. If we take down the top-ranked team there, we'll be... Oh. Oh, hologram. Tablet. Contender Looper! Please! Sign for me! अरे स्कैम कर रहा है भाई ऐसे डिजिटल उस पे कभी साइन मत किया करो ठीक है स्कैम करेगा बैंक बैंक से भाई पैसे निकल जाएंगे भाई ऐसे साइन मत करना कभी ये वो है क्या कहते हैं आईपैड है भाई ये आईपैड होगा या तो सैमसंग का टैबलेट होगा भाई Did you replace Contender Emilio? Oh, that's front page material. Hey, make some room! Looper, I loved your performance. Please, will you sign for me? डिजिटल पे कभी साइन मत करो भाई No one wants my autograph. भाई क्या भाई कभी चॉइसेस भाई जो आता है भाई No one wants my autograph भाई Don't worry. I'm confident we'll claim the title. Soon enough, you'll be signing autographs till your hand bleeds. All right, everyone. I can handle this, but it will take too long. We need to make a swift retreat. Okay. But how? अगर देखो अगर ना ये मेरे को भी एक ख्याल आया है ये लूपा के बारे में लाइक लूपा जो है लाइक बेसिकली सस्ता वर्जन ऑफ चांगली होगा भाई लूपा बेसिकली सस्ता वर्जन ऑफ चांगली भाई उधर जाना है क्या नहीं इधर कहाँ पे इधर अच्छा हाँ तो उधर ही जाना है ना उधर ही तो ले जा रहा है हाँ फाइंड ऑल द सप्लाई चेस्ट अभी नहीं भाई अभी स्टोरी कर रहा हूँ भाई थोड़ी देर में करता हूँ पहुंच गए What was that smirk about? Oh, me? I just sent word to certain people. Too much modesty is a double. वैसे क्या लगता है भाई साइट वाला जो वेपन है लूपा का ये एक्चुअली कौन सा वेपन होगा क्या नया वुदरी में जो है नया वेपन निकालेंगे कि कोई दूसरा वेपन हेवी डैमेज बोनस वाले जो मतलब हेवी शॉट जो होते हैं उसको एज अ साइड बनाएंगे इसको Hunting and contesting for more. क्या लगता है Lions and wolves. हेवी डैमेज वाला जो वेपन है ना हेवी स्वॉर्ड Hyenas. उसको एज अ साइड वेपन बनाएंगे क्या Eyes on their क्या belly. लगता है Everyone wants a taste of the juiciest meat. तो मैं चैट नहीं दिखता कभी कभी को And with the illegal हाँ betting they're running. अभी चैट पर अभी दिखेगा चैट They hear I've left the old team. ब्रॉड सोर्ड हाँ ब्रॉड सोर्ड Willing to get a piece of. ब्रॉड सोर्ड को एज अ वो बनाएंगे क्या साइड बनाएंगे क्या कि नया वेपन टाइप बनाएंगे ये लोग The waters are already so murky. देखो अगर नया वेपन टाइप अगर इन लोगों ने निकाला ना तो बेटर होगा But it's still better now than it was before. The mess they made before the current. ये ब्रॉडबैंड ऐसा साइट वैसा वो नहीं फील नहीं आएगा May applause greet you, Looper. दिखाएगा साइट लाइक
जैसे Been waiting वो for होता है, you. वो जैसे गेंशिन पे है ना, जैसे पोलाम को एज अ साइड दिखाया गया है कुछ कैरेक्टर्स के लिए, जैसे तुम्हारा वो Power of legions. क्या कहते हैं आर्लिचिनो के लिए उसको एज अ साइड दिखाया गया है, One. ठीक वैसे दिखाया जाएगा कि Or two. या पोलर यूजर आएंगे शायद से, पता नहीं, कुछ तो आ सकता है भाई। Silver hoped you'd behave and return home. She bid that I reason with you at the. क्या तो पोलर यूजर आएंगे इस पे नया, But it seems you found yourself a new ally. या तो कोई वेपन को स्किन टेक्सचर देंगे। And what's your point? How disappointing. Not even a hint of charm when there's no crowd around to impress. Feeling confident about this new team? देखा जाएगा। What do you think your chances are of winning the championship? With me in this ब्रॉडबैंड दिखाएगा। ब्रॉडबैंड क्या होता है भाई? ब्रॉड सोर्ड होता है वो। enough. ब्रॉडबैंड Spare me the game. मैंने अभी नोटिस किया भाई, तुमने वो ब्रॉडबैंड लिखा है भाई। ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन को एज अ साइट दिखाएगा भाई। You involved in the Silver's match fixing. ये देख रहा हो साइट लग रहा है, वो लग रहा है, ये पोलम लग रहा है, साइट नहीं पोलम लग रहा है ये। I do love money, but I don't. साइट भी नहीं लग रहा है, ये पोलम लग रहा है भाई। एक पोलम यूजर होगा क्या? Fair enough. You may leave now. देख रहे हो पोलम लग रहा है वो। Dangerous question, Looper. Think carefully. The Silvers may have made you a star, but they can just as easily snuff that star out. I've never doubted your talent, but स्किप करके नहीं खेलते क्या? rules of मैं पहली बात वुदरी उसका स्ट्रीम रोज तो नहीं करता ना। I know the rules. अगर मैं वुदरी में इसका स्ट्रीम अगर रोज करूंगा तो मैं स्किप कर खेलने के लिए तैयार हूँ भाई। I just wonder if dominant. मैं वुदरी में इसका बट जैसे कोई नया स्टोरी आया, क्या कोई स्टोरी रिलीज किया या तो कोई इवेंट आया तो मैं उस टाइम पे वो करता हूँ उस दिन के लिए। हाँ मेन ऊपर से वो भी है, मेन स्टोरी स्किप नहीं करने का। मैं दूसरे गेम स्ट्राइक करते जाता हूँ ना, तो जैसे कि अभी जैसे इस पे ये वाला चैप्टर रिलीज हुआ है He's a free man. तो इसीलिए मैं इसका वो कर रहा हूँ, स्टोर कर रहा हूँ। For the past few years. Look, और स्टोरी में जो म्यूजिक्स होते हैं भाई, Hero's Way. We'll get to the Capitolini Hill district. फ्री आरटीएक्स भाई, Countless फ्री का आरटीएक्स walked this very रिफ्लेक्शन path भाई। to Colosseum Olympus, just as we are now. वैसे मैं ग्लाइड करते हुए जा सकता था। इधर क्या आया है? स्पीड मो, अच्छा यूज की, अच्छा वो रीना सीटा पे जो है उसकी तरह है। मैं इसको लूंगा और ये स्पीड, हाँ समझ गया। खत्म कर दिया, वाह भाई। भाई साहब क्या शेड, ये देख रहे हो लिटरली आर्टिक्स वाले जो रिफ्लेक्शन पड़ते हैं ना, रेड रेस पड़ते हैं, वैसा लग रहा है भाई ये। जैसे ये रोशनी में आया पूरा, जैसे अंधेरे में गया थोड़ा सा ये देख रहे हो डार्क, ये देखो एकदम डार्क दिख रहा है। जैसे मैं ये वाले हिस्से पे जाऊंगा थोड़ा सा वो रोशनी दिखाएगा, लेकिन रिफ्लेक्शन पड़ रहा है हल्का सा आर्टिक्स वाले। The next qualifier is just ahead. Once it's over, we can take the cable car to the. मेरा आर्टिक्स है भी नहीं भाई। On an autumn day, the view as you ascend and the breeze on your face इधर क्या है? truly lift your spirits. अच्छा सर वो है, ओके। ओ एक्टिवेट करो, एक्टिवेट मिस मत करना। एरिया एक्टिवेशन, एरिया मैप एक्टिवेट करो भाई। डबल पल्सेशन करता है ये, ओके। इधर और कुछ नहीं है,
ये वाला लास्ट एरिया बचा है। वैसे ये जो पूरा एरिया है ना, इधर इधर पूरे एरिया में एक भी मतलब वो नहीं है, लाइक टैसेड इतना कुछ नहीं है इधर। मेन जो है इधर ये एक टैसेड वाला हिस्सा है बस। पूरे इस एरिया पे बस एक ही टैसेड वाला हिस्सा है भाई, एक टैसेड और एक बॉस, और कुछ नहीं। से बात करना है। Are you ready for the gladiator 𝐴𝐺𝐺? Yep, I am ready. Hunting glad. वैसे भी ट्रायल कैरेक्टर से खेलूंगा भाई, तो बिल्ड्स करने की जरूरत नहीं है। ओके अभी थोड़ा सा, अरे 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 रुका रुका, हाँ डिस्ट्रॉय कर 17K, नाइस। ये ऐसे, अरे यार, अरे एक जन करके आ भाई, फ्लाइट नाम की कोई चीज ही नहीं है। नया कैरेक्टर कौन सा निकालने का, क्या? एक मिनट क्या नया कैरेक्टर कौन सा निकलने वाले हो? फर्टिलिस मेरा वो है, गारंटीड है, ठीक है। अरे 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 जो ये है ना लूपा कैसा है पता है? गेंशिन पे वो है ना हमारा, वो फाइटर वाला सुमेरु में जो मिली थी, उसका नाम क्या था? पायरो वाला लड़की, अरे जो स्टैंडर्ड में है, नाम भूल गया मैं उसका। एस भाई पता है क्या उसको? अरे वो पायरो वाला सुमेरु में जो था, पायरो वाला, जिसका स्टोरी आर्कॉन क्वेस्ट के साथ जिसका लिंक था, उसका नाम क्या था? उसका नाम क्या था? अरे यार मैं भूल गया उसका नाम। अरे मैं भूल गया उसका नाम क्या था। अरे पायरो वाला था ना, लड़की था भाई, प्लेबल कैरेक्टर स्टैंडर्ड बैनर में, पायरो वाला जो पंच करती है अल्ट पे। अरे यार मैं भूल गया उसका नाम। सुमेरु मेमोरी लॉस। सही जगह जा रहे हो, बट वही नाम नहीं याद आ रहा है। नाम नहीं याद आ रहा। रुको मेरे को एक बार चेक करना है, क्या था उसका नाम, क्या था भाई, क्या था उसका नाम? तो पायरो वाली भाई, दया, हाँ दया, राइट। ये लूपा मेरे को दया की याद दिला रहा है भाई, उसका जो अल्ट है ना, लूपा का जो अल्ट, जैसे साइड पे हमारे साथ जो लड़ रही थी, उसका मैंने अल्ट अभी देखा, लाइक अल्ट या तो कुछ तो फेंका उसने जमीन पे, वो मेरे को दया का वो लग रहा था भाई, स्किल। Contender isn't in the power of legions anymore. What a shame. भाई वुथरिंग वालों ने अगर निकाल लिया ना पोलाराम भाई, It's unfair to her former teammates and her fans. Is it about the money? She's changed teammates how many times now? Without the Silver's patronage, there's no way a gladiator from the outskirts could rise to fame so quickly. Quiet down! Where are you hearing these rumours? Open your eyes. Wilbur has never once thrown a match.
Everyone thinks they know the real truth. Let's go, my fellow warrior. हाँ हाँ, क्या हो गया सावन भाई? It's all going as planned. Let's get you settled somewhere comfortable. Then tomorrow. I've been meaning. Tomorrow is the semi-finals. Is there a body of water in the city? I think Cartethiya might have passed through there. A body of water? Yes, but it's been abandoned for years. That elevator can take you to the upper city, though. Okay. If you want to try looking for her, we can start there. Thanks. And Yes? those people just now, they talked about match fixing. Don't you want to challenge that? I didn't have time to gather enough proof before I left. Besides, this isn't the right moment. Once we win the Great 𝐴𝐺ON, I'll make everything public. In Septimont, only the winners get to speak their truth. so that does not bother you? I'm fine. High praise leads to harsh words. It's always like that. Honestly, I don't care what people say. This kind of thing happens every day in Septimont. If you can't handle it, you won't last. Tarnishing rivals' reputations is one of their usual tricks. I cut off their betting profits, so it's only natural they'd be upset. Besides, now I have a reliable warrior by my side. That's all that matters. No worrying about whether my teammate can keep up, no dealing with petty politics, just the thrill of the fight. Thank you for that, my fellow warrior. बे सावन में क्या लिख रहे हो ये? बे बे क्या लिखने की कोशिश कर रहे हो? किधर जाना है? ऊपर? Why would the place you mentioned be abandoned? Because of the first dark tide in Laguna. Oh, you know what a dark tide is, right? सही जा रहा हो क्या? Yes. वो हाँ सही जा रहा है. Due to certain safety concerns at the time, the main city district was relocated further up the hill. Further up the hill, तो इधर से होते हुए मेरे को इधर का लाइटिंग मेरे को उतना ज़्यादा वो नहीं लग रहा भाई, मतलब कुछ ज़्यादा ही ब्राइट लग रहा है कभी-कभी. Like over brightness, over contrast है भाई, ऐसा लग रहा है बीच-बीच में. तो कहीं पे लिफ्ट है क्या? लग तो रहा है भाई इधर कहीं पे लिफ्ट है जहाँ से मेरे को नीचे जाना है. या तो मैं गलत आ गया. आई थिंक मेरे को नीचे से जाना था. भाई इतना स्मूथ तो नहीं, इतना स्मूथ तो कभी नहीं चला भाई मेरा ये गेम. कुछ ज्यादा स्मूथ चल रहा है भाई. लाइक एक बार भी अभी तक स्टटर नहीं हुआ उतना. जो बीच में जो स्टटर होता है ना, वो स्टटर नहीं हो रहा. You said Cartethiya might have been here. Do you have an idea of where she passed through? I think somewhere over there. Ah, that's where the statue of 𝐴𝐺𝐴𝐳 is. स्टैच्यू ऑफ टर्क्यूलिस. क्या ये हरक्यूलिस का रेफरेंस है? स्टैच्यू ऑफ हरक्यूलिस का रेफरेंस है क्या? स्टैच्यू ऑफ टर्क्यूलिस. ये तो चैलेंज है, ये बाद में करूँगा.
I think ये इसका डिफरेंस है भाई. Efficiency bubble. ओके आ गया मैं पानी के पास आ गया. This is the place. I'll look for Cartethiya's traces here. How? Through the connection we share. All right then. I'll wait here. Good luck. Okay. Cartethiya is not here. How's it going? You look frustrated. I have still lead on the Arsinosa. That's right. I'm sure you'll make progress by the finals. 𝐴MD. His statues once stood tall on both sides of the street, watching over the heroes of Septimont as they set out to hunt. Back then, the chimes drifting up from the city were the finest sounds of glory. Beware of the Peripherals lurking below. Those tacit discords will ambush anyone who falls into the water. Are those the city's ruins down there? Yes, remnants of the old district. We rarely use this route since it's too dangerous, but some thrill seekers come here to hunt tacit discords. Speaking of which, this area is actually under Silver jurisdiction. Cartethiya. I've never heard that name before, but it feels strangely familiar. Huh. अभी तक पहुंचे क्या लिखे अभी तक लिखना चाहते क्या वो अभी तक पहुंचे नहीं थे ऐसा लिखना चाहते हो वेपन क्या लिख रहे हो ये Someone's still alive. एक मिनट ना मैं जरा ये देख लूं Are you okay? You seem like a local. Are there any फिर other मैं survivors? करता हूँ I'm managing. I can still move, but I'm exhausted. I've walked for so long, for so far, but I still can't leave this city. The white tidal light follows me wherever I go. Tidal light? Could she mean the dark tide? What's your name? I don't remember.
That's all right. Memories can be recovered, and so can your name. I've been through something similar myself, and someone helped me find my way back. I've only just arrived here. All of Septimont is cloaked in mist. Would you mind sharing with me what you still remember? Who are you? My name is Cartethiya. I'm Raguna's... I'm a wandering knight from Raguna. A wandering knight. भाई एम्ब्यूश कर दिया एक होस्ट ने. Welcome to my city, Griffon's fortress of Capitolini Hill. Who are they? Oh, some minor noble houses that didn't make it into the 𝐴𝐺ON. In Septimont, strength and power go hand in hand. Nobles get more, but they better prove they're worth it and pull their weight for the city. The 𝐴𝐺ON isn't just about fortune. It's a way to find the capable. For nobles, the ability to command and control echoes is a basic responsibility. If the heir of a noble house isn't strong enough, it signals that the house is unfit to hunt down tacit discords or protect Septimont. So, if a noble's been living it up, they'll end up broke and thrown out of the city after paying high patronage fees for a gladiator who doesn't even make the cut. Okay. Sounds harsh. Might not work like this everywhere, but here in Septimont, with the dark tide breathing down on necks, it's our survival code. For most Septimontians, the 𝐴𝐺ON isn't just an event. It's the training ground nobles and commoners alike have to fight in. The victors show no mercy to the defeated. People here despise weakness, worship strength, and crave glory. Where you come from doesn't matter. Prove yourself, and the crowd will scream your name. The spotlight's yours, the arena's your stage. But if you can't keep up, if you're not chosen, you'll be left in the shadows. Come to think of it, we haven't had anything to eat since those 2 matches. Right, I know just the thing I want you to try. Oh, I can already smell it. Can almost taste it. Okay, इधर पहुंच गए हम. Efficiency above all. Fulvia! 2 large platters, please, with 2 bottles of heart pour. Oh, it's Lupa!
I heard she left the Bow of Legions. That's enough, folks. You know the rules. No gossip outside the arena. Just dig in. Still got that fire, huh, Fulvia? You should talk. Finally cut ties with the Silvers, eh? With the way they handle the share of profits, you should have left sooner. Well, back then a strong backer was exactly what I needed. Can't say it was all bad. So, this is your new partner. Looks like you can handle yourself. You can tell Judgment, okay? Most dependable one in all of the Solaris at his service. Well, you better prove it in the Aegon then. By the way, Heart Paw is sold out today. Guess the celebrity branding really worked. Oh, come on! What's Heartpour? A drink I endorsed. Most of the drinks I promoted were... but this one's actually really good. हेलो हाँ गया भाई कंज्यूम क्या लिखे हुए इसमें क्या कंज्यूम्स वेपन फॉर क्या लिख रहे हो ये कंज्यूम वेपन फॉर द सेम नेम वेपन अपग्रेड क्या लिख रहे हो ये आप आधा अधूरा करके समझ में नहीं आ रहा भाई वेपन अपग्रेड वेपन में वो वेपन लिखना चाहते हो वो समझ में आ गया या आधा अधूरा करके क्या लिख रहे हो भाई वो पूरा लिखो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ऐसे If my name's on it, you don't have to worry about quality. It's just that the taste... Well, let's just say it's meh, at best. Anyway, I'll get you a taste of Heartpaw later. For now, let's enjoy the meal. So, fellow warrior, any stories to share? There is still much to learn about each other. Hey, Lupe, got a message from old Abius. He said Ulbia. of restored footage just arrived, including those about Contender Mia. Oh, thanks! I almost forgot with everything going on lately. Restored footage? Recordings of major matches or famous contenders. Helpful for those who want to learn from them. F4 Augustus are the most popular. A4 Augustus. She became the champion and a household name by crushing every single opponent. From there, she worked her way up into the F4 seat. But I prefer watching Contender Mia's matches over any of the past champions. I think she's got real heart. You can feel it. Even through the recordings. The way she threw herself into every fight. Do you think we'll face her in this Aegon? Not likely. She disappeared during a great Aegon years ago. Some say she got tangled up in illegal betting scandals.
Others think the pressure from her manager drove her to leave Septimont. There are plenty of rumors, but no one knows what really happened. Still, it's frustrating to just disappear halfway through. If you fail to make it to the end, people will see you as nothing. Disappoints. Their dishes hit the spot every time. Now that our bellies are full, time to relax. To Leonidas Hotel. It's the best place for travelers in Septimont. I've got a long-term rental there myself. क्वेश्चन चार्ज हो गया है ये चार्ज नहीं हो अभी तक okay. होटल पे जाना है होगा बट होटल के अंदर जाना है Welcome to your new spot. It's a lifetime suite, and it's yours anytime you need it during your stay in Septimont. एक तो है भाई जैपनीज सॉन्ग है तो जैपनीज सॉन्ग है Speaking of which, I own a room in the Backstreets too. A lifetime suite must cost a fortune. Don't mention it. The hotel owner sees us as future champions. Supporting us is an investment that will pay off. Of that I am certain. You know, gladiating means everything to me. I really, really love it. I know I'm lucky. I know what I want and I'm doing what I love. Compared to those drifting through life, I've already been given so much. But sometimes... Sometimes what? Well, sometimes I feel a little afraid. I was born for this, but the more I embrace it, the more I fear losing it. I can't help but wonder, what is it that fills me up when I'm under those lights? My passion for the fight? Or the favor it brings me? If one day I lost that favor, would I be more helpless, panicked and heartbroken than those who never had it in the first place? If that day comes, would I still be able to say I love this life? You're right. I hope that love never fades. Not until I'm buried in the veil of glory. Tomorrow is the semi-finals. We'd best get some rest. Good night, my fellow warrior. What? What? What just happened? Huh?
हाँ better get some sleep. Sleep बाद में, पहले तुम वो बताओ क्या हुआ, क्या करो? करना ही पड़ेगा, कंटिन्यू करने के लिए बाहर नहीं जा सकता. Lie down and oh, okay. Holy shit, dream पे आ गए थे. Lines fall all around me. And music coming from above. Oh, four lava. But an illusion. One of the lights. One of dreams. Not like the spectacle you saw in the glimmer of the carnival. Here, I am not your foe, nor can we harm each other. Should we say no? Lay your blade to rest, if only for now. 'Tis a pleasure to see you again. On this special stage, the city wild and beautiful, chasing endless glory. Tell me, does Septimont please you as much as Let's cut the chase. You're connected to Cartethiya's disappearance. Has the Peripherals hand already reached Septimont? Ah, so it is she you seek. It appears this special resonator has you rather captivated. Let's take our time. I would like our talk to be pleasant. No one will bother us here. I have an associate who adores the heroic tales told throughout this land. For this reason, the missing girl you seek and the anomaly you sensed in Septimont, they are indeed threads in this tapestry. You could call it an obsession of his. Is obsession of his? Tell me what you really came to say. Tell me what the Peripherals is planning. Every hero's tale begins with a trial. Your wisdom and courage, your compassion and resolve, your hope and madness. Will they be strong enough to carry you through the trial? To make you the hero of the story? Read it. I hope the story speaks to you. The answers you seek lie within these pages. If we continue to meet as foes, the symphony grows monotonous. I confess I find it rather uninspired. I'll ask again, Frolova. What are you doing here in Septimont? Why give me this? I am giving this story a little nudge. As of now, you and that blessed maiden from the tower are deeply interwoven in the fate he has spun. So you're not the only overseer active in Renacita. Scar, your nameless ally, and you. The Fraxidus seems to revel in the company of those with twisted obsessions. It's not as you imagine. You've already met my associate, you see. He trusts what he sees, not the words of others. I've already crossed paths with him since arriving in Renacita. As a creator,
He always hopes his characters will craft twists and turns that he himself cannot foresee. He believes that the closer one stands to the protagonist, the greater their influence over the tale. But the true lead of the story has yet to emerge. I gave you this play so you can see the ending. That gladiator girl will be the harbinger of all glory will be consumed, and the pride of heroes will dissolve within a blackened maelstrom. Such is the finale she holds most dear. This is a short story, one that only lasts 3 days. When the final match concludes, so too will this story. You could claim the spotlight by ending her life before the curtain falls. Change the ending, and the tragedy is averted. But should you falter, or worse, warn her of what's to come, the consequences will spiral far beyond anything you can imagine. What you're proposing, I do. Tell me, what reason do I have to trust a word you're saying, Føllova? You don't need to trust me. Let my words slip from your thoughts if you wish. As I've already said, the story will unfold as my associate has written it. The choice lies with you. It is a freedom we all hold. Even the wildest imaginations draw from what already exists. So it is with this story. It follows a template, and even its creator cannot escape its confines. Okay. Choose wisely, Rover. Time is still on your side. For now. I look forward to your performance. Offers a faint smile and carry. मरने नहीं देते लोग. कोई बुक वाला वो है. तीनों चैप्टर्स कंप्लीट कर दिया हमने. ओके. Alright. Where are we off to? बाहर. What are you up to next? बाहर जाना है. पापा इधर क्या कर रही है? Morning, fellow warrior. Huh. You don't exactly look well rested. Føllova may not have told the whole truth, but there's no denying the anomaly here in Septimont. Neither Lupa nor the others here seem to notice. That fleeting image. Lupa turning into that unfamiliar girl. I need more clues before making any decisions. I'm fine. Just a bad dream. Let's get going. Our next stop is the Coliseum Lindis, right? You got it. Let's get going. Okay. लिफ्ट है ना? हाँ, इससे नीचे जाना है फिर सामने की ओर. ओके. ओह ये वो है सेमीफाइनल वाला एरिया. ग्रैंड टूर्नामेंट.
expected, the Silvers chose to face us in the semi-finals. The news spreads quickly. You knew this was coming? Of course. To them, it's a provocation, and to forfeit would be a disgrace. Dominant Julia must be here. She wouldn't miss a moment like this. She's shrewd and exceptionally capable, but arrogant to the core. She's convinced that she's always right. She doesn't believe that the savings through, thinks it's for the weak. So we'll show her we don't need rich. honestly weapon. Pure strength. Oh, Augusta. And I stand before you once more, not as a gladiator, but as a witness to the start of this grand event. You all know well that gladiatorial combat is the lifeblood of our ancient and mighty city. Seize power and fight for victory. Once, we fought to survive on the seas. That same instinct courses through our veins today. The instinct to face fate head-on and defy it. Remember, those who cling to glory without the strength to defend it will see it slip through their fingers. Honestly, ये जो voice है ना, थोड़ा सा मेरे को वैसा लग रहा है. Like बुरा भी नहीं है, अच्छा भी नहीं, मतलब बीच में. Like जो क्या बताऊँ, सुना लग रहा है voice बहुत. Look forward to the rise of new heroes in this Aegon. Let the Aegon begin. Victory is ours for the taking. Okay, fight, main fight चालू हो रहा है अभी. Are you ready for the gladiators, Aegon? Yes, I am ready. Hunting gladiators. I mean, we are ready, bhai. Oh, हम लोग तो dodge करना पड़ेगा. Nice. Waiting क्या कर रहा है? Nice.
Play dirty in the arena, huh? Esteemed Ephor, I must bring a grave matter to your attention. In this very match, the Silvers stooped to underhanded tactics. Speak plainly, gladiator. This spear, it was a gift from Domina Julia, head of House Silver, when I first joined the family. Back then, I trusted the Silvers completely, never once doubting their intentions. That is, until I chose to leave them, not long ago. Now in today's arena, this spear spiraled out of control, nearly stabbing my own teammate. I said you what? Of course. And your proof? Honorable Ephor, I guarantee this spear will withstand any scrutiny. Looper, you owe your fame and fortune to our patronage. Yet, you turned your back on us when we needed you the most. Allow me to remind everyone, House Silver does not cower, nor fear defeat. In past Aegons, we have constantly led in victory. Even if we lose today, we will not be expelled from Septimon. So tell me, Looper, who is truly desperate to destroy whom? A lone gladiator cut off from her family? Or a house as powerful as mine? Enough of Oh. this disgrace. Stop your performance, Jester. What? What entrance? That's Yuno, the priestess of Septimond. She rarely leaves the temple. Okay. The heroic spirits of the moon and stars have long seen through it. These hollow lies taint Septimont's sacred arena. Guilty. I said you what? It's obvious. I said you what? No chance. No, I said it. 50 phase. That can't be right. It's typical, isn't it? Augusta, banish the Silvers from Septimont. The priestess can foretell fate and has the power to make final calls here. Most people trust her judgment. But Yuno is a bit extreme in our line of priestesses. Not everyone agrees with her behavior, despite her capabilities. Guilty. The temple has spoken. That's outrageous. Unbelievable. Despicable stuff. Yeah, I do too. Yeah, they're guilty. Guilty! 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 Julia Silva,
You know the weight of your actions. I know your family once stood as the cornerstone of this city. Its pioneers, its founders, its protectors. For centuries, the Silvers fought bravely in the hunting grounds, defending Septimont from tacit discards. But today, you dishonor their legacy. Do not disgrace them further, Julia. Leave Septimont. Do not ever return. As you command, F4. Your performance just now, that wasn't a complete disaster. At least you show more promise than those idiots retreating to cling to their meager points. An outlander. Fight well, both of you. Do not disappoint me or Augusta in tomorrow's final. Yeah. Seems there's still some time before the other semi-final concludes. Let's head to the lounge for a break. Head to the lounge. Let me cut to the chase. The Silvers are finished. F4 Augusta's swift decision sealed their fate. Don't tell me you had no part in this. Who's to say? How could I predict Domina Julia would tamper with my spear? Regardless, House Silver has been banished. Even if they deceived you first, you still left their team without a word and violated your contract. You can't deny that. Skip to the end, Cartethiya. You're not here to catch up or spread gossip. Fine then. I handled the Silver's sponsorship of the Bow of Legions, and I can ensure the damage to your career is minimal. In return, I'll be your event manager for the next year. Deal. But we'll need new terms. I trust you'll draw up a contract that satisfies me, Cartethiya? Always ready to squeeze an opportunity, aren't you, Lupa? The Silvers lit the spark, but you turned a blind eye to what was happening. Don't fool yourself, Cartethiya. You're complicit in this too. Fine. We'll do it your way. Wait! What? You didn't come to me just for money, did you? F4 Augusta, the fiercest hunter in the grounds, our queen. If there's a storm brewing in Septimont, I intend to find the right place to take shelter. Finally some peace. What a day. Mention the apologies for that. Before Augusta's judgment. F4 Augusta had a humble origin. Her path to power was paved in blood. Decades ago, corruption ran rampant in Septimont, far worse than it is now. Two F4s met untimely ends back then. The great Aegon carries immense weight for the city, and I guess that's why she chose this moment to act.
the priestess of Septimont has the authority to make final judgments. Yuno, in particular, is one of Ephor Augusta's staunchest allies. Most prophets spend their days in the temple, observing fate's flow and tending to the eternal flames. But Yuno's different. She prefers to spend her time in the hunting grounds, bow in hand, patrolling with the other fighters. Born during an eclipse, she's the most gifted among her line. Impressive, isn't it? That's right. I owe you for helping me escape Julia's tricks. Okay. Final Kibari, final chapter. That fleeting frequency, it was similar to the Thenodians. Could it really be linked to the dark tide Lupa will bring forth in Septimont, as Verlova said? Lupa, can I see your spear? Here you are. I can't feel that abnormal frequency anymore. Lupa, does Domina Julia believe in the Sentinel? Well, if anything, she despises the acolytes in Ragusa. Her obsession with titles is for the glory that comes with them. She prides herself on being the perfect Septimontian. It's highly unlikely she'd believe in the Sentinel. I see. Sorry. Lend me your shoulder for a moment. I'm a bit tired. Go ahead. Oh, wow. That's settled. Looks like the other two teams have wrapped up their match. The semi-finals are over. Finally, we can leave and get some rest. Cartethiya! Oh, congratulations on reaching the final! Oh, and your performance earlier was truly impressive. Lupa, did you notice any signs of match fixing involving House Silver before? About that? I told you not long ago, the Bow of Legions has been exploiting their gladiators. But no one dared to speak up. If you win the final, you will have the whole of Solace raising their drinks to your name. Solace क्या चीज़ है? Population target situation situated in the communal neighborhood. Famous for its signature drink Solace. Writers often smear. अच्छा. All right, everyone. I'll chat with you later. But first, let's give my fellow warrior a moment to breathe, okay? He's new to Septimont. I'm sure none of you want to get carried away and leave a bad impression on an outlander, Go. Find somewhere quiet to rest. I'll meet up with you once I've dealt with all this. इधर बात कर रही है, मेरे को उधर जाना है, उधर जाके थोड़ा सा वो करना है बातचीत. Leaving by taking the elevator. एलिफ्टर लेके जाना है, एलिफ्टर. एलिफ्टर लेके जाना है ऊपर.
पहुंच गए। Lupa. It was the Thenodian and Dark Tide's frequencies I sensed in her weapon, if only for a brief moment. She thought it was just the Silva's dirty trick, and didn't notice its connection with the Thenodian. Belova said her associate can weave fate and stories. If that's true, it means his forte can influence how things play out. Yeah? It's unlikely he can freely bend the fabric of reality. Astrids would have overrun Solaris long ago if he could. Either Septimont exists outside reality, or his ability has limits. If this isn't the real world, I could take more drastic actions. But if it is, killing Lupa would be an act I could never take back. The best approach is to stick to my original plan. Wait for Orsinosa to appear in the final. That's my lead to Cartethiya. I also sense Cartethiya's frequency on Lupa too. If she's here, she's making moves, just like I am. In the meantime, I need to figure out that Overseer's limits. The longer this lasts, the more anomalies are bound to show. Boss, why the long face, huh? Something getting you down? Wuthering, why are you here? I'm here for sightseeing. How could I miss the Great Aegon? It's Septimont's signature event. हेडफोन्स बढ़िया है भाई, हेडफोन्स। To break the deadlock. Deadlock? You've noticed it, haven't you, boss? Septimont is caught in some anomaly. Okay. How much do you know about it? This is our second time meeting, Wuthering. It can't be a coincidence. I can feel it, but I don't know where it's coming from. Every time I get close, it slips away like smoke. But now, I'm sure of it. If I want out of this mess, I need to borrow some of your muscle. But Taoists have their rules, can't say too much. But helping you helps me. A little nudge is no big deal, right? Here, take this. A little something from me to you. A good start for us. Anyway, it's on me. No charge. Okay. Seeing isn't believing, but truth exists in the mirror of the world. Go ahead, see for yourself. What do you think? The final's nearly here. Will contender Mia claim the title? She's done well so far, but her track record has been shaky. She'd better not slip up now. I've bet a fortune in the underground pits. If she loses, that John fellow promised she'd win no matter what. John. Mia's manager. What is with Maya? All sorts of talk round her, and the odds are crazy. But past champions have always been the noble bloods, haven't they? Well, not to mention, she's originally from Raguna. Wuthering.
She's gone again. I remember Lupa mentioning a gladiator named Mia. She disappeared years ago during a great Aegon. Belova said the story only lasts for 3 days and ends during the final. The great Aegon is at the heart of the story after all. The bell on this mirror is jingling. The closer I move in that direction, Copper mirror tells the formula mirrors are said to reveal hidden truths. Okay, drinking sound. Unusual figure. John, how many more times must we go through this? I know you can't bear to lose your golden goose, but Mia's completely lost it. That woman's crossed the line. Easy, easy. Haven't I already compensated you? Just bear with her a little longer. She's not losing it every time she steps into the arena, is she? She's just been under a lot of pressure. She's not the only one under pressure. They're planning to bring Peripherals into the final. Do you realize how much money is at stake? Tell me, how can I trust a fighter like her to win the final? I know Mia's unraveling, the hallucinations, the hysteria. It's been a lot. Did you know she cries in the lounge? Can you believe it? A gladiator in the lounge crying. She can't even connect with the audience, including her fans. What use is being a great fighter if you can't hold the crowd? We have no choice. The people of Septimont want to see her fight. If we take her out, the complaints will bury us. Manipulative manager. The star from Raguna, the champion of Septimont. That headline alone prints money. ओके एक काम करते हैं देखो मैं थोड़ी देर के लिए पॉज कर रहा हूँ ठीक है क्योंकि 20 से 500 मिलेंगे ओके ओके सो मैं जो कह रहा था हाँ मैं थोड़ी देर के लिए पॉज करता हूँ क्योंकि खाना खाने जाना है लंच करके आता हूँ फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ ठीक है लंच करके आता हूँ फिर कंटिन्यू करता हूँ इसको कंप्लीट हो गया ओके कॉन्वीन पे कितना आया 152 व्हाट शायद से आई मीन वर्ल्ड लिस्ट निकाल सकता हूँ बट निकलने का मुझे भी नहीं कर challenge complete treasure spot ट्राई करता हूँ एक बैकपैक शायद से कुछ है हाँ बैकपैक के लिए T3 हुआ है 4
जाएगा 54 पे पर डे मिलेगा नहीं। ठीक है, मैं इतने तक रखता हूँ अभी, मैं खाना खा के आता हूँ, ठीक है? उसके बाद आके फिर कंटिन्यू करूँगा। मैं क्विट कर रहा हूँ इसको। टास्क मैनेजर, टास्क बार बिहेवियर, आज ऑटोमेटिकली भी पे कर। एक मिनट, ये कर सकता हूँ मैं इस पे डाल सकता हूँ। ब्रेक काम करता हूँ, थोड़ी देर के लिए ब्रेक पे जा रहा हूँ, ठीक है? लाइक 15-20 मिनट के लिए ब्रेक पे जा रहा हूँ, फिर आऊंगा, फिर कंटिन्यू करूंगा। आज खत्म कर दूंगा, मतलब स्टोरी खत्म, मेन स्टोरी खत्म कर दूंगा आज। उसके बाद मैं वो करूंगा, वो खाली टाइम पे बैठ के इवेंट कर लूंगा, इवेंट करके मैं पुल कर लूंगा, ठीक है? लाइक एक्सप्लोरेशन और वो करके। चलो भाई, मैं थोड़ी देर के लिए, ये स्ट्रीम थोड़ी देर के लिए पॉज हो रहा है, ठीक है? मैं स्ट्रीम को एंड नहीं कर रहा, ये थोड़ी देर के लिए पॉज हो रहा है, पॉज फिर वो होगा, ठीक है? 15-20 मिनट के लिए पॉज हो रहा है ये। चलो भाई, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। आह जाने जाना, ढूंढे तुझे दीवाना, कदमों में रोजा है, और जिंदगी में आना सनम। ओ आ देखे जरा, कितनी गर्मी है भाई, एकदम पसीने से नहा लिया हूँ भाई मैंने। यो रुको भाई, चैटूस, अपना चैटू किधर गया? हेलो चैट, कैसे हो चैट? चैट, चाटूस, चाटना मत भाई, अरे चाटूस, कतई चाटूस हो रहा है भाई। हम आ गए हैं भाई, रुको। गेम चालू करना है।
ये चालू करते हैं, चालू हो रहा है। मेन स्क्रीन पे जाते हैं। मेन स्क्रीन पे जा गए हैं। जैसे ये लोड हो जाएगा तुरंत ये बंद करके ये ऑन करेंगे। चालू हो रहा है ये। नहीं कर भैया भाई। चिल डिसेबल्ड है। चिल रेडियन चिल। चिल एनेबल करना पड़ेगा, रुको। राइड ऑन चिल। राइड ऑन चिल यूज करो। रेडियन चिल एनेबल करो। लिमिट्स FPS मैक्स FPS 140, मिनिमम FPS 30 पे कर दो। मैक्सिमम जाएगा 144 तक। आई मीन 120 करते थे, बेटर होगा। uh, 144। अब इसको बंद करो, दोबारा चालू करना पड़ेगा। तो भाई चालू करते हैं। मैं उधर से भी चालू कर सकता था, इधर से भी चालू कर सकता था। उधर से चालू करना बेटर रहेगा ऑनेस्टली। आह, आह, चालू हो रहा है, बंद करो। एंटी लैग डिसेबल हो गया है। अच्छी भाई, एंटी लैग ऑन करो। एंटी लैग ऑन करना पड़ेगा, रुको 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 रुको। एंटी लैग ऑन करना पड़ेगा, एंटी लैग वाला फीचर। चिल ऑफ कर देना, एंटी लैग ऑन कर दो ताकि लैग ना हो। इसके लिए एक बार और गेम रिस्टार्ट करना पड़ेगा। तो रुको भाई। 80% रेडियन चिल ऑफ। चिल मतलब ये वो कर देता है बेसिकली, ठंडा रखता है मशीन को अगर इस बैकग्राउंड पे गेम ना चल रहा होगा तो। कस्टम प्रोफाइल है, एंटी लैग ऑन है। गेम चालू करते हैं, रुको। चालू हो रहा है ये, मिनिमाइज कर दो इसको।
लोडिंग स्क्रीन पे थोड़ा सा टाइम लेगा। तो देख रहे हो 40 fps दिखाई दे रहा है, 40 fps ऊपर 39 40। तो मैंने इसको 40 fps पे लॉक रखा है बेसिकली, ताकि उससे ऊपर ना आ जाए, ताकि मेरा OBS थोड़ा सा वो ले पाए। ठीक है, और ये हमेशा लोडिंग स्क्रीन पे थोड़ा सा लो हो जाता है, फिर 40 fps पे लॉक हो जाएगा आते ही। पर दिख रहा होगा तुम लोगों को इधर। इसको मैं सेंटर पे ला सकता हूँ वैसे तो। अब ये टुडुम टुडुम होता रहेगा भाई, रुको। राइट है, सेंटर करो इसको। अरे यार ग्रीन ग्रीन किधर गया? ग्रीन Time to get back to work. इसका वो आता है ना, क्या कहते हैं वो, बैकग्राउंड ओपेसिटी। हाँ ये देख लो 40 fps पे लॉक है ये। मैंने जानबूझ के 40 fps पे मैंने इसको लॉक रखा है वैसे तो, क्योंकि वरना वो लैग होना चालू हो जाता है ये। मैं इसको अगर मैं ऑफ करूँ, लाइक नॉट दिस वन, इसको ऑफ कर दूंगा, ठीक है ये। और अभी हम लोगों को ये दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। तो डिस्प्ले कैप्चर ऑफ कर दो, और अभी अगर मैं इसको ये कर दूंगा तो ये सही हो जाएगा। अभी एकदम स्मूथ हो गया भाई इसको। All right. Where are we off to next? मेरे को 1 मिनट देना, मैं एक काम कर रहा हूँ थोड़ा छोटा, बहुत ही छोटा काम है, ये काम कर रहा हूँ भाई। हो जाए All right. Where are we off to next?
भाई मेरे को कभी कभी ना ग्राफिक्स देख के भाई सब क्या लग रहा है ग्राफिक्स। वो इधर जाना है सही जगह पे आ गया। नाइस। Unusual figures. That gladiator girl, Mia, was it? I hear she's got quite the following. Oh, absolutely. Everyone loves her, as long as she's winning. Before the great 𝐴𝐺ON, I remember her performance was abysmal. Hysteria, they said, utterly unhinged. Filters नहीं है, नॉर्मल है भाई। अगर नन भी रखूंगा तब भी ये अच्छा दिखेगा, शार्प दिखेगा थोड़ा। Shocking how far she fell. Her value plummeted to rock bottom. I thought she'd be done after that, but then that John dragged her out of the mud. Oh yes, it's tragic, really. Poor Mia. John will wring every last credit out of her. How pitiful. My dear Lucius, you've surely heard about the underground pits by now, yes? Oh? What are you... The commoners who bear grudges against the Senate, the vultures... ज़्यादा ही सफेदी हो गया भाई। Simmers within them, a keg waiting to ignite. They're eager for chaos, bloodshed, and sacrifice. If we simply provide the spark, we'll make a fortune while eliminating untoward risks. Delightful. Nothing like a bit of spectacle and strife to pass the time, is there? Isn't it bomb? Relax, Mia. You can do this. Hold on. It's all right. I'll be fine. It hasn't been all bad. I've met people who've supported me. They've cheered me on since I first stepped into the arena. But I know my limits. No matter how much I push myself, this is as far as I'll go. I love this. Gladiating. Just stepping into the arena makes me feel happy. But here, I can't treat it like a hobby. And, oh, I want to be seen. To hear them cheer for me. Their laughter, their cheers. Oh, I want to win. I want to win so soon.
I need the money. Oh, divinity above. I hope I won't let anyone down. Oh, I need to be better. Much better. वॉइस एक्टिंग बहुत बढ़िया है भाई, वॉइस एक्टिंग बहुत ही बढ़िया है भाई। Warrior! For an instant, I felt it. The Thrunodian's frequency again. Whew. I've finished talking with them. Let's go back. Oh, almost forgot. This is for you. The harpor I wanted you to try before. Chilled is the best way to have it. Okay. You need to rest before continuing this investigation. Your strength is spent. Thank you for your help these past few days. We're both from Renacita. I'm here by the Sentinel's will. This is simply my duty, for I was once blessed by the Sentinel. The blessings and freedoms they grant, I wish to share them with everyone across these islands. The tidal blight is spreading faster. I'm afraid. It's okay. Do not let it break you. One thing is certain. This anomaly stems from a specific power. Some facilities and records have been rewound nearly 2 decades back. We just need to find out why and who's responsible. The clock is ticking, but we still have a chance. The mastermind behind this will be tricky to deal with. Don't worry, I'll handle it. Compared to the darkness that once whispered in my ears, a tangible enemy is easier to face. Besides, the Righteous One will notice this anomaly when he arrives. Our move so far will guide him forward. You really trust him, don't you? Yes, very much. We correct each other's mistakes and walk the path of salvation together. Trust in yourself too. One day, you will reclaim your name. As for those vile intentions lurking in the dark tide, we'll cut them off together. Now, shall we continue the investigation? Are you ready? Absolutely.
so exhausting. Dealing with these headaches takes more energy than fighting in the arena. What is it? You're radiating worry. If it's about tomorrow's final, maybe you should relax a bit. Lupa, can you tell me more about Mia? Sure, but why the sudden interest? I'm just curious. I overheard some people talking about her earlier. Well, contender Mia. I first heard about her from Domina Julia. Julia didn't like her. Probably because they once competed in the same Aegon. Mia disappeared after claiming the title, leaving that Aegon without an official champion. An ignorant fool! That's how Julia described her. Back then, I'd just been purchased by the Silvers, and I got curious about the story. Turns out, Mia spent almost all her time out of the arena training. Beyond the barest of needs, she devoted herself to honing her craft. That kind of dedication wasn't well regarded in Septimont back then. Rumor has it she got caught in dirty match fixing, cracked under the pressure and ran. Everyone has their breaking point. If she ran because of it, I don't blame her. What about you? Are you tired? Well, maybe I just handle these things better. Or maybe I just don't care about people's expectations. I'm not above the commercial events. It's how I made a name for myself, built my worth. As long as I'm in the arena, I'm happy. Applause comes and goes, but the things that matter, facilities, resources, opportunities, they don't come cheap. Septimont has its shadows, but some things still have to get done. I don't mind being used as long as whoever I work with knows where the line is. I know it's easy to turn a blind eye to the dirty games, but that's just handing Septimont over to the vultures. The Silvers played dirty in the arena I hold dear. They trampled over a line that should never be crossed. So, we're done. Okay. Look at it. How beautiful. To the great city of Septimont. Lupa speaks with you a little longer before leaving. Today's the final! Let's go! Chalo bhai. 3 BRs, and may you find the one you've been searching for. फाइनल स्टेज की ओर कंप्लीट करते हैं भाई. भागते हुए चलो भाई. Look over there! That's Arsenosa! Arsenosa.
So that's the guardian echo of Septimont. There's something different about this Arsinosa compared to the one I saw confronting Cartethiya. Oh, hold on. I forgot to tell you something yesterday about Mia. Decades ago, during the Great Aegon, Mia disappeared on her way to receive the award. Before that, she did claim the title of the Bloody Aegon and even received Ipsinosis' blessing. The Bloody Aegon? The current 2-on-2 matchup was only introduced thanks to Augusta and her predecessor. Before that, the matches were far more brutal. Gladiators were thrown into a chaotic free-for-all. The hype of the event, the organizers would unleash hordes of tacit discords into the arena. The last gladiator standing was crowned the victor. At least, changes have been made since then. Refined by flames and tempests, all that endures eventually becomes part of Septimont's legacy. The day of the final is here. Arsinosa watches, and her significance is known to every Septimontian. It is etched in chronicles and sung in legends. If you seek the glory of Arsinosa's blessing, then fight with everything you have. Show me if any of you four possess the strength to earn the Guardian's recognition. Listen, my fellow warrior. Those cheers are for us. They wait for us to give them a fight to remember. Are you ready to win this with me? Wonderful. Now, it's hunting time, my fellow warrior.
Cartethiya's frequency is getting stronger. अभी आएगा ना वो वाला बाय कट स्ट्रीम बाय इसके साथ फाइट करना होगा शायद से I know क्या करना है ले हट करो स्टैमिना खत्म हो गया
up? It's a good phase. Definitely wasn't a dream. It was like the real world overlapped with the anomalous one. I kept seeing Lupa and Mia overlap with each other's brains. Brilliant performance, warriors! Remember, this is more than just a title. It is a testament to your own strength and wisdom in overcoming your opponents. You've earned the right to claim it. आधा इसको मिलेगा आधा उसको मिलेगा वाह भाई This medal once belonged to a single champion, the last survivor standing in the ring. But I divided it into two, to remind you that just as we fight alongside echoes, the glory of Septimont is upheld by heroes who support one another to remain steadfast. Fighting alone is commendable. However, true strength lies in protecting those beside you. Okay. The high tide draws near. I want all warriors heading to the hunting grounds to remember this. That's interesting. Augusta, look. Another two have earned Alcinosa's blessing. You've done incredibly well.
As a gladiator, it's a great honor to claim the title with you. Let's savor this moment of glory and joy. Plotted this tragedy. No, madam, I wouldn't take all the credit. The architects of this tragedy were the Septimontians themselves. A collective murder so entertainingly woven, with blood on every hand. Who's left to point a finger? But I must admit, I'm astonished you would endure all this for strangers and lands you've never set foot on. I don't need any grand reason to slay a villain like you. The Threnodian once sought to pull the entire Renacita into the Dark Tide, but it failed. And so will you. Madam, surely you know you alone cannot undo my story. Alone. He will come here and find a way to finish this. And I will make your so-called perfect play spiral out of control. Silent, hollow words. The dark tide engulfs the city of glory. All shall be swept away by the winds at the stormy sea. Shadow First of the Glory completed. कंप्लीट हो गया. चैलेंज ऑफ ट्रेजर स्पॉट वाला कंप्लीट करने हैं छोटे मोटे ये. ये सब ये कंप्लीट कर लो. ये छोटे मोटे वो है. तो कंप्लीट कर सकता हूँ भाई, आराम से कंप्लीट कर लेता हूँ ये. मेरे को कुछ होल्स मिले होंगे शायद से, चेक कर लेता हूँ. मेन चैप्टर का कंप्लीट करने का वो है. नाइस गाइस पे ये आया है कैवेस्टोर करके कुछ. काउवासॉरस भाई. खोलता 54 हुआ है. 55 55 55
55 हो गया है, नाइस। Find the father and daughter and an argument. तो random quests है भाई ये, तो ये मेरे को करना पड़ेगा। ओ अच्छा, ये वाला एरिया में। Okay, चेस्ट मिल गया। Some pocket money. Won't say no to that. एवोक ट्रैक मिला है। ओके, फ्यूजन ट्रैक। अरे इधर ये चाहिए ना सेंसर। ओके, 2 चेस्ट मेरे को दिख रहा है, तो प्लस 3 चेस्ट मेरे को दिख रहा है। ये I'll take it as my overtime fee. 2 इधर है। ये क्या है जिसको 2 में पड़ेगा? ओ इसका इधर है। इधर वो था ना। एक मिनट। ओ दिख गया। दिख गया मेरे को। अब कर उसको। Efficiency bubble. For profits. Gotcha. सही है। ऊपर एक और है। एब्जॉर्ब करो इसको।
इधर नीचे की तरफ एक और है। कंप्लीट हो गया। ओके ये बेटर है यूज करना, ये ट्रैक करना पड़ेगा। हम इधर है, इधर से इधर जाते हुए ये वाला एरिया खोल देंगे। वाला हिस्सा भी खोलते हुए जाएंगे भाई। वो दिख रहा है वो। जल्दी से बाहर हवा दे रहा है। अरे भाई बारिश होगा इधर भी। ट्रैक हाँ All right. Where are we off to next? अयो भाई इसको बिठा दिया रे भाई, बेचारा थक गया भाई। Time to get back to work. सर वो बॉस है ना।
इधर क्या है? Slow down. Some tactical hologram virtual dancer will slow debuff during the hologram changing zone. Greatly challenge area हो गया. मेरा ना वो हो रहा है, डिस्कनेक्शन शो हो रहा है. को भाई. कुछ तो है. Bedroom dancers. इसे तो मैं इधर से वो लेके ऊपर जा सकता हूँ. ये जब नीचे जाके इसको लो. Bedroom dancers just मिलेंगे इनसे. चलो वेपन की जरूरत नहीं है. अच्छा जनरल जेनेसिस अच्छा होगा. चेक. Hopefully first Battle Genesis होगा या Hatred वाला है. नाइस परफेक्ट है. मेरे पास 80% परसेंटेज वाला चाहिए भाई. इधर है नीचे की तरफ. पर इधर तो नीचे की तरफ है. इसका मतलब इधर से जाना पड़ेगा ना.
Where? Okay. They're in the favorite. Yeah. I'll take it as my overtime fee. Correct. तरफ जाना पड़ेगा इधर ऊपर की तरफ हो गए Perfect wind to glide. इधर कुछ तो है हो गया इधर इधर मैं मेरे राइट साइड कर दूँ ठीक है भाई समझ गए इधर रखना दूसरी तरफ इधर ऊपर की तरफ हो गई और बॉल के आसपास इधर है ना चढ़ जा At your disposal. तो क्या है भाई
Grip containing gems. Barrier. Computer, nice. So we are 20% exploration. You are right. Okay. ट्रॉफी पे ये आया है एक्सप्लोरेशन डन सेवन पे भी नहीं आया सामने एक चेस्ट था चेस्ट है कहाँ पे की तरफ है ओके
रखा है ये? हाँ क्या है ये? नीचे जाने का रास्ता है क्या? Efficiency above all. देख रहा है को वैसे
the wall. Fine. Comes with the job, I guess. Job, I guess. मैं अब देख रहा हूँ उसके पीछे इधर से Fine. Comes with the job, I guess. तो इसमें का Efficiency, above all. challenge.
survive. तो कंप्लीट हुए हैं। परफॉर्म 6 डॉज काउंटर्स। बहुत एनोइंग होगा भाई। आजा आजा एक और बार। आजा। पांच हो गया, ठीक है। बाद में कर लेंगे यार, करना स्पिन। एक बॉस की कट की था भाई। ऊपर की ओर होते।
ओके ये कुछ तो नया है Arine 3 decent तो okay adjust flash angle okay 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 ah okay that's it अच्छा समझ गया ऐसे कैसे करना है वो समझ करना है quick slash to earn more points challenge complete I'll take it as my overtime fee.
50 होगा। मिला इससे भी नहीं मिला। वाह रे भाई, इतना का पीटी हुआ है भगवान जाने। कितना 4 6 5 7 58 प्लीज 22 फुल और चाहिए। 22 चाहिए और 22 चाहिए और और चाहिए। फिर से आता है ना। की तरफ देख क्या मेरे को Perfect window blind. For profits. Gotcha. I'll take it as my overtime fee. Gotcha. कोई बात नहीं। Some pocket money.
Summon Solution DLC, that's zero damage.
𝐼𝐚𝐯𝐞𝐫𝐢𝐳𝐠.
सोनार ये कंप्लीट करना है। अच्छा ये वाला है। Leave it to me. Another day, another heroic me. Let's give
Stay sharp. Time to fight back.
stay sharp. 정신 잡아? 진짜 많이 꺼내. 내가 사건을 써서.
Stay sure. I shall lead the way.